નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 3, subject English Grammar, chapter number 25, Conjunctions. Right, here you can see that one picture is given on the page number 92. 5 clouds are here. In first cloud, we have been to so many hills and villages. In the second, we have tried skiing and ice skating, but we have not tried river rafting yet. In the third, should we try river rafting next or snowboarding? Let's go snowboarding because it is fun. Next and last one, post. You are only saying that because you don't know how to swim. Right? Here you can see that in these clouds, and, but, or, because are using that. Right? Next one, we use and, or, but, because to join two sentences. They help us to connect ideas. In the yellow box, conjunctions are words that join ideas together. Here you can see that 4 conjunctions in our grammar book. And, or, but, and because. Right? Jaya went to school. She met her friends. Here two sentences are given, but answer is Jaya went to school and met her friends. Using the conjunction and join the sentences. Right? Read the following examples to see how we use the different conjunction. First one is and. एंड में क्या होता है? एड इंफॉर्मेशन. राइट. नंबर 1, मिली वेंट टू द पार्टी, हमीश वेंट टू द पार्टी. अभी हमें दोनों सेंटेंस को एड इंफॉर्मेशन करना है, यानी कि दोनों नाम हम एक सेंटेंस में ऐड करेंगे. सो द आंसर इज मिली एंड हमीश वेंट टू द पार्टी. राइट. नंबर 2, आई वेंट अप टू द डोर, आई रैंग द डोर बेल. दोनों इंफॉर्मेशन को ऐड करके एक सेंटेंस बनाना है. I went up to the door and rang the doorbell. Done? Number 2, conjunction or. और में क्या होता है? choice. Right? You can pay by cash, you can pay by credit card. Here you can see that choice is given. दोनों में से आप choice करके एक तरह से पेमेंट कर सकते हो. राइट? सो द आंसर इज यू कैन पे बाय कैश और बाय क्रेडिट कार्ड. यस. नेक्स्ट वन ऑन द पेज नंबर 93. थर्ड वन इज बट. बट कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट मीन्स ऑपोजिट साइड. Here you can see that one example is given. She can speak English. She cannot speak Chinese. So the answer is she can speak English but she cannot speak Chinese. Next one, because. Because reason. बिकॉज ज्वाइन करते हैं तभी रीजन दिया गया होता है. राइट? एग्जाम्पल, आई डिड नॉट गो आउट टू प्ले, इट वॉज रेनिंग हेवीली. आंसर इज आई डिड नॉट गो आउट टू प्ले बिकॉज इट वॉज रेनिंग हेवीली. डन. नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज ए इज गिवन. सो वी विल गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज ए. Circle the correct option for each of these sentences. Right? Number 1, I am not hungry, blank, I had
a heavy breakfast in the morning? भूख क्यों नहीं लगी है? क्योंकि सुबह को नाश्ता किया था, हैवी ब्रेकफास्ट। तो रीजन दिया गया है, जो रीजन का आंसर क्या आएगा? बिकॉज, राइट। सो द फर्स्ट आंसर इज बिकॉज। अंडरलाइन द वर्ड। कौन सा वर्ड अंडरलाइन करेंगे? बिकॉज, राइट। नंबर 2, दिस मूवी इज इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी लॉन्ग। क्या दिया गया है? ऑपोजिट है, इंटरेस्टिंग है बट लॉन्ग है, राइट। सो द आंसर इज बट। नंबर 3, आई पिक्ड अप माई बुक्स, पुट देम इन माई बैग। दोनों इंफॉर्मेशन दी गई है, सो एड इंफॉर्मेशन के लिए आंसर क्या आएगा? एंड, राइट। सो द थर्ड आंसर इज एंड। Number 4, do you want to watch a movie? Play video game? Question mark. दोनों में से एक करना है हमें। क्या करेंगे? चॉइस है, चॉइस में क्या यूज होगा? और, राइट। सो द फोर्थ आंसर इज और। Remaining 5, 6, 7 and 8 number complete by yourself. Done. So here you can see that our exercise A had completed. So we will going to learn exercise B. Fill in the blanks with and, or, but, or, because. Number 1, I met Venkat blank. I did not meet his sister. Opposite आया, right? So आंसर में क्या आएगा? But. फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। आई मेट वेंकट बट आई डिड नॉट मीट हिज सिस्टर। नंबर 2, वी हैव वन हॉलीडे दिस वीक। आई कांट रिमेम्बर इफ इट इज ऑन थर्सडे ब्लैंक फ्राइडे। एक हॉलीडे है तो चूज करना होगा कौन से दिन है, राइट। सो द आंसर इज और। We have one holiday this week. I can't remember if it is on Thursday or Friday. Right? Number 3, I got late for school. Blank. There was a traffic jam. Here you can see that reason is given. Right? So the answer is because. I got late for school because there was a traffic jam. Number 4, Pooja has been coughing, blank sneezing since morning. Two information are given, so we can add information with and. So Pooja has been coughing and sneezing since morning, right? Number 5, this is a nice watch. It is old blank new. चॉइस करनी है, क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। पुरानी है या नहीं? सो द आंसर इज और। दिस इज अ नाइस वॉच, इज इट ओल्ड और न्यू? राइट। नंबर 6, आई नो हाउ टू स्विम, ब्लैंक। आई डोंट नो हाउ टू स्केट। ऑपोजिट दिया गया है, सो आंसर इज बट। I know how to swim, but I don't know how to skate. Number 7, she washes the clothes, blank, hangs them on the line. Two information are given, right? So the answer is and. She washes the clothes and hangs them on the line. Last one, number 8. I could not answer your call, blank. I was sleeping then. Here you can see that again reason is given, right? So the answer is because. I could not answer your call because I was sleeping then. Done? So here you can see that our exercise B had completed, and also chapter number 25
conjunction had completed. Thank you for joining us.